Hare Krishna, Kalacakra Prabhuji, please accept our humble obeisances, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Still you are in Dwarka Dham, Prabhuji? You are in Dwarka Dham only? No, I am in Rajkot today. I traveled from Dwarka to Rajkot yesterday evening. Yeah. I hope my voice is okay. Yes, Prabhuji. Till now it is very fine, Prabhu. Okay. And it is our great fortune, Prabhu, today on the Madhav Tithi. We have this opportunity to hear from Srimad Bhagavatam, and that also from the devotee who is putting his sincere efforts and who is very sincere to just help the people who are in ignorance, and so sincerely you are serving, Prabhuji. So by your sincere desires, definitely the Lord Sri Krishna will will help us purify our hearts, and we will also sincerely receive the message. So we are so thankful to you, Prabhu. As we know, you are in Yatra, you will be so much busy. I don't know how you are managing your schedule. It is very difficult when you are in Yatra. You will be having so many things to do, move, not by your this plan, but still you are managing that. So we are so thankful of you, Prabhuji, from our core of heart. So as Prabhu's introduction, we already on the first day, and even earlier also, occasionally we are getting Prabhu's divine association. So now we will not take much time. We will just welcome Prabhuji by taking shelter of holy name, chanting Hare Krishna Maha Mantra, and then we will hear from Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare. Over to you, Prabhu. Thank you so much, Yashmati Nandan Prabhuji. I really thank you, Vasant Prabhu, and all the other leaders for giving us this opportunity. Our Krishna Prabhu, for 2 days he is helping us. Ranchod Krishna Prabhu. Yeah. Wonderfully, he is doing service. Yes. Yeah. So thank you for this opportunity to glorify Srimad Bhagavatam and the wonderful prayers in the association of devotees. It's a very rare opportunity to do this in the association of devotees. So for that I'm really thankful to you all from the core of the heart. Directly we will go to the verses. Yesterday I think we read up to verse number 10, where the last 5 verses 6 to 10, Lord Brahma is lamenting the pitiable condition of the various living entities, and also empathizing the situation they are in, how much they are suffering, and not even realizing that they are suffering. This is a very pitiable situation. And so as a pure devotee, naturally he wants to somehow or other bring Krishna in their life so that they will be relieved of their problems. So we will go from verse number 11 onwards. The verse 11 is amazing. Can I give this essence, Prabhuji, what you spoke about till yesterday, what we Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, just gone through. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी ने बताया कि कल जो हम लोगों ने प्रभु जी से श्रवण किया था श्लोक 6 से 10 तक, तो उसमें ब्रह्मा जी वो खेद व्यक्त कर रहे हैं जो हम बद्ध जीवात्माएं हैं, हम लोग बद्ध अवस्था में हैं और ये हमको ज्ञात भी नहीं हो रहा है. तो ब्रह्मा जी क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो जीवात्माओं के कष्ट को जानते हैं, और उसको जानते हुए ही ब्रह्मा जी वो अपने हृदय से जीवात्माओं के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं. Please, Prabhu, you can now. Yes. So we will read the verse 11. Is a very big verse. It's most often quoted verse and very important verse. So we will read that after we chant our Mangalachan prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमं श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमी नमो विष्णुपद विष्णुपुष्टाभूतले चिंते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते गौरवाणी So Prabhu's Mataji, we will read the verse number 11, no? One of the amazing verses. Tvam bhakti yoga paribhavita hrit saroja आसे श्रुते क्षितपतो ननुनाथ पुंसां यद् यद् धियात उद्गाय विभावयन्ति तत् तत् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहात्. Can somebody read the translation, please? Translation: O my Lord, your devotees can see you through the years by the process of bona fide hearing, and thus their hearts becomes cleansed, and you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think of you. This is one of the most famous verses in this particular prayers of prayers by Brahma in Srimad Bhagavatam. तो ये ब्रह्मा जी की जो प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, उनमें से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है. Verse number 5 was one big sloka, and now this verse number 11 is another important shloka. तो इसके पहले जो पंचम श्लोक था वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, और उसके बाद में ये जो 11वां श्लोक है ये भी महत्वपूर्ण श्लोक. You know why? The reason is because in both these shlokas, the importance of hearing the transcendental sound vibration is emphasized. ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कारण है कि दोनों में जो महत्व दिया गया है वो श्रवण के लिए दिया गया है. And that Shravan, hearing, is actually, it's not just hearing, it is actually experiencing. ये खाली श्रवण ही नहीं है, ये एक अनुभूति का स्तर है. Because if you see in the verse number 5, the fragrance, the smell or the fragrance, flavor that is coming from the lotus feet of the Lord, the kosha gandham, we are asked to, it is said that the devotees will smell through the ears. तो पंचम श्लोक में बताया गया कि जो सुगंधी है वो भगवान के चरण कमलों से आ रही है,
और जो भगवान के भक्त हैं वो कर्णों से उसको अनुभव करते हैं. Smell through the ears, you know. So what do you say for smell, Prabhu? सुगंध प्रभु जी. Smelling. Normally we smell through the nose, but this sound vibration is smelled through the ears. जी प्रभु जी. तो हाँ? उसको उसकी सुगंध लेना, उसकी सुगंध को लेना. Yeah. So that is the interesting thing that is mentioned there. Normally, what you smell through the nose, we are actually they said that the devotees will smell through the ears. यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वैसे जो हमारी इंद्री है, घ्राण इंद्री, मतलब जिससे हम लोग सुगंधी लेते हैं, वो नासिका होती है, लेकिन यहाँ पर बताया कि ये जो सुगंधी है ये हम लोग कर्णों से इसको ग्रहण करते हैं. And in this sloka, in verse number 11, there is a beautiful word used that is called Shruta Ikshita. जो 11वां श्लोक है, इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो है श्रुत Ikshita श्रुत ईक्षित. means you can see through the ears. जिसका अर्थ है कि हम लोग कर्णों के द्वारा दर्शन कर सकते हैं. So there is one other place in Bhagavatam where it is said pibanti, you know, that is means you drink through the ears. अन्य जगह पे श्रीमद् भागवतम में पिबंती बताया गया है कि हम लोग कर्णों के माध्यम से उसको पी सकते हैं. So this, you know, the interesting thing here is you can smell through the ears, you can see through the ears, and you can drink through the ears. यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हम लोग कर्णों से सुगंधी ले सकते हैं उसको, और हम लोग उसको श्रवण कर सकते हैं, उसको पान कर सकते हैं, पी सकते हैं. And all these three are possible only through the process of Bhakti Yoga. और ये तीनों संभव हैं भक्ति योग की क्रिया के द्वारा. And here, very specific, you see both in that verse number 5 and in verse number 11, in there also it is called Bhaktya Grihita Charana Paraya Chatesham. Here also it is Bhakti Yoga Paribhavita Hrit Saroja. All the both Saroja is the same. Bhakti is Saroja also means lotus. There Yetu Todiya Charana Ambuja. Ambuja is also lotus. Bhakti Yoga here also, Bhakti Yoga there also. But there one the ear is doing the service of another limb, that is the another sense, that is the nose. Here the ear is doing the sense, the duty of another sense, that is the eyes. तो दोनों जो पंचम श्लोक है और ये 11वां श्लोक है, इसमें हम लोग समानता देखेंगे तो वहां पर भी कमल सरोज आया है, और दोनों में भक्त्या या यहाँ पर भी भक्ति, ये दोनों में ये आई हैं, और दोनों में ये दिखाया गया कि जो भिन्न इंद्री हैं, एक नासिका की सेवा कर रहा है और एक कर्ण. तो इस प्रकार से ये जो समानताएं हैं ये दोनों श्लोकों में हमको मिल रही है. Normally in the mundane terms, mundane ways, you will not be able to do the job of one service with one sense, job of one sense in the another sense. भौतिक दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो एक इंद्री से हम लोग दूसरी इंद्री का कार्य नहीं कर सकते. But in transcendental seva, it is all possible. परंतु दिव्य स्तर पे ये सब संभव होता है. And that is why, and that is happening because of the process of Bhakti Yoga. और ये संभव हो पा रहा है मात्र जो भक्ति की प्रक्रिया है उसके द्वारा. But then we say, Prabhu, I am engaged in Bhakti Yoga, but I am not able to see through the. लेकिन हमको प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी, मैं तो भक्ति योग में युक्त हूँ, लेकिन मैं तो अभी कर्णों के माध्यम से नहीं देख पा रहा हूँ. But that answer is given in the next word, the next word in the verse itself, that is paribhavita.
उसका उत्तर श्लोक में ही दिया गया है, परिभाविता. Can you read the word for word in this? I don't know, you took out this share or the share there. Yes, Prabhuji, I will get that. It is paribhavita in the beginning. Being 100% engaged. पूर्ण रूप से युक्त होना, तो ये परिभाविता उसका ये अर्थ है, बीइंग 100% इंगेज, 100% युक्त होना, तो ये इसका भावार्थ दिया गया है. Yeah, so being 100% engaged is the answer to that. If you are not able to see the Lord through our ears, then it means that we are not 100% engaged in the seva. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा ये इसका शिक्षा आ रही है कि यदि हम लोग भगवान की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम लोग जो कर्ण से जो हमको सेवा करनी है श्रवण की, तो वो 100% हमारी नहीं हो रही है, और यही कारण है कि हमको वो अनुभूति प्राप्त नहीं हो पा रही. This 100% engaged does not mean 24 hours I am just moving about the seva only. That is not the meaning. I mean 100% I am just going only doing seva. Not like that. यहाँ पर 100% का अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे ही हमको युक्त रहना है, ये अर्थ नहीं है. There are times you may have to do other household duties and this duties and that duties. ये हम लोग इसको सेवा करते हुए हम लोग अन्य जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनको भी हम लोग साथ साथ कर सकते हैं. But as long as we do it with the bhakti bhava, then they are devotional service. Even our responsibilities like taking care of family, our office work or our whatever it is. यदि हम लोग भक्ति भाव से अपना जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में फिर समस्या नहीं है यदि हम लोग अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, अन्य जो सेवाएं हैं, उनको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं. So that is where the paribhavita word comes into play. Paribhavita, see, beautiful word it is. Completely with full bhava. Bhakti bhavanamrita we say, no? Krishna bhavanamrita we say. Such a beautiful word it is in our Hindi. So that unless and until there is bhava in it, it is not 100% engaged. यहाँ पर ये परिभाविता में जो भाव जो शब्द आया है, तो ये महत्वपूर्ण है. यदि हम लोगों के अंदर में वो भाव नहीं है भगवान की सेवा के लिए, तो ये 100% कभी भी नहीं हो सकता है. So what does he do here? Tvam bhakti yoga paribhavita. If those who are doing 100% engaged in devotional service, full bhava, then what do you do? Hris saroja asse, to reside in their heart, lotus of their heart. And then what do they do? They see you through the ears by hearing the sound vibration from the bona fide devotees. So that is why they are called Shruta Ikshita. Shruta Ikshita Pato Nanu Nata Pumsam. Right? Now you are the Lord of them. You become the Lord of them. And Yadyatiyata Urugaya Vibhavayanti. They think of you in so many different forms. Some of them think of you in Lord Rama form, some in Narasimha form, some in Krishna form, some in so many different forms. Even that is not there in the avatar list also, they may be thinking. But in what Tattadvapu Pranayase, to show your special causeless mercy to them, whatever form they are thinking of, you are revealing yourself to them in that form. यहाँ पर जो शब्द है महत्वपूर्ण की भक्ति योग परिभाविता की 100%, तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, ये 100% में भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान उनके हृदय में स्थान ले रहे हैं. भगवान उनके हृदय में अपना स्थान बनाते हैं, और तब जो भक्त होता है वो कर्णों के माध्यम से भगवान का दर्शन कर पाता है. और भक्त Sorry, Prabhu. Go ahead. I thought you finished. भक्त फिर भगवान का दर्शन उनके अलग अलग जो स्वरूप हैं उसमें कर पाते हैं.
So we all know so many different examples how the Lord came in different forms according to the devotee's wishes. But this is the power of doing devotional service with full bhava. तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं, लेकिन ये सब को समझने के लिए जो जो योग्यता है वो भक्ति का भाव है. So this is, this shows the extent to which the Lord can be merciful to his devotees. तो ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों को कृपा देने के लिए किस स्तर तक भगवान सहायता करते हैं. So that is a very important point in this particular verse, and here he is revealing that the Lord's greatness through the form of his transcendent mercy, and it also shows the importance of how much we should be attached to the hearing and kirtan, Shravanam and Kirtanam process of Bhagavad Gita, Bhagavatam and the Holy Books. तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो भगवान की जो कृपा है कि भगवान किस प्रकार से अपनी कृपा को वितरित करते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हमारा जो गंभीर जो हमारी अपना जो उसमें हमको प्रयास करना है, हमारा जो प्रयास है वो 100% होना चाहिए श्रवण में. तो ये दोनों का जब मिश्रण होगा तो इससे ये जो भक्त हैं वो भगवान का जो दर्शन है वो कर्णों से फिर कर पाते हैं. Now there is one another interesting point here which it gets revealed by referring to another shloka in Srimad Bhagavatam. Yeah. तो यही जो विषय है ये श्रीमद् भागवतम में एक अन्य श्लोक में भी इसी प्रकार से बताया गया. There is one point here. It is said that thus their hearts become cleansed, and you take your seat there. तो यहाँ पर जो बताया गया है कि भगवान हृदय को शुद्ध कर लेते हैं और वहां पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं. Actually, Prabhu, you translated interestingly. You said Bhagwan Shuddha kar lete hain, correct? Yes, Prabhu. Actually, what you said is I was recalling 2.8.5, Prabhuji. That is also there. 2.8.5. There is one more beautiful verse that also says that. I just wanted to connect those 2 points. Thus their hearts becomes cleansed, and you take your seat there. That's what Prabhupada says here, of course, according to the sloka. But actually, you know what? That is cleaning also Krishna only does. यस प्रभु जी. तो प्रभु जी ने बताया यहाँ पर जो बताया गया है वो है कि जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो तब भगवान वो अपना निवास स्थान बनाते हैं, लेकिन वास्तव में जो शुद्धि है वो भी भगवान ही करते हैं. How? Through the process, through in the form of his transcendental sound vibration, Shabda Rupa. तो ये भगवान कैसे करते हैं? उनका जो दिव्य जो ध्वनि है उसके माध्यम से भगवान ये शुद्धि करते हैं श्रवण के माध्यम से. Yeah, yesterday also we saw how we can realize the swarupa of the Lord through the Shabda Rupa of the Lord. तो कल की जो चर्चा थी उसमें हमने ये श्रवण किया था कि कैसे जो शब्द के माध्यम से भगवान वो हृदय की शुद्धि करते हैं. So we will refer to that verse once. This verse number 12:48. By the time you take, I will sing the sloka, very beautiful sloka this is, and then we'll read the translation. 12:48. 12:48. Yes. तो अभी हम लोग इसमें इससे संबंधित जो विषय है जो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक 48 है, तो उसको हम लोग वहां से समझने का प्रयास करें. संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुता भावो व्यसनो पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को प्रमिवाति वातः.
You can read the translation. Translation: when people properly glorify the Supreme Personality of Godhead or simply hear about His power, the Lord personally enters their hearts and cleanses away every trace of misfortune, just as the sun removes the darkness or as a powerful wind drives away the clouds. तो यहाँ पर बताया कि जब कोई बहुत सही जो भाव है सही ढंग से भगवान का गुणगान करता है श्रवण के माध्यम से भगवान की जो शक्तियां हैं उनके बारे में जानने के लिए, तो भगवान फिर व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और उनके हृदय में जो थोड़ा सा भी जो मल बाकी रहता है उस मल को भी भगवान दूर करते हैं, जिस प्रकार से कि सूर्य वो जो अंधेरा होता है उसको या जो बहुत तीव्र जो हवा होती है वो बादलों को दूर कर लेती है. So this is amazing. Personally, he enters the hearts and cleanses away every trace of misfortune, anartha, everything. यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान व्यक्तिगत रूप से ये सब कुछ कर रहे हैं. So what does it mean? The hearing and chanting of the sound vibration is so powerful that with that itself we can get all the benedictions that we ask from Krishna. इसका अर्थ क्या है? ये जो श्रवण की जो प्रक्रिया है ये कितनी शक्तिशाली है कि इसके माध्यम से इस प्रक्रिया से सब कुछ हमको वो दिव्य जो वस्तु है वो प्राप्त हो रही है. So that's why this shloka is very important. We just quickly rush through because we have quite a few more things to cover. What I would do here is verses 12 to 16. Here it is all about the description of the Lord, and also 19 up to 21. It is all about the different descriptions of the Lord. This is more self-explanatory and devotees can read at their leisure, because yesterday I told you that there are two important sections that are pending, which is the last 4 verses of the prayers 22 to 25, and then Krishna's answers. Right? Let's try to focus on this in the time available. I will leave the rest of the shlokas right now that is there with you to do it at your leisure time, and another time Krishna arranges, we will take that advantage to discuss them in detail. यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं कि इसके आगे जो अभी 11वें श्लोक तक हमने चर्चा की, उसके आगे जो श्लोक 12 हैं और लगभग श्लोक संख्या 21, यहाँ तक जो विषय है वो भगवान के विभिन्न जो उनके ऐश्वर्य है, उनकी जो भी कार्य है, भगवान की जो क्रियाएं हैं, रूप गुण लीला, उसका पूरा जो वर्णन है, जो कि भक्त लोग स्वयं भी उसका अध्ययन करके उसका जो विषय है उसको समझ सकते हैं. तो अभी जो इसके आगे जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं 22 से आगे, तो क्योंकि समय सीमित है तो उस पे हम लोग अभी केंद्रित करेंगे. In verse 21, Brahma says that you are just opening your eyes like a blossoming lotus in the morning. तो 21वें श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जब अपने नेत्रों को खोल रहे हैं तो ये जिस प्रकार से एक कमल वो प्रफुल्लित होता है, कमल जैसे खिलता है, उस प्रकार से आपके नेत्र खुल रहे हैं. So now once the Lord opens his eyes, what does he do? भगवान जब अपने नेत्रों को खोलते हैं तो उसके बाद में भगवान क्या करते हैं? This is a very beautiful thing, So we'll read this verse. Soyam samasta jagatam suhrideka atma satvena yandudayate bhagavan bhagena tenaiva me drishamanusprishatadyataham srakshyami purvavadidam pranata priyosau.
Can someone read this translation? It's a beautiful verse. रणछोड़ कृष्ण प्रभु जी, आपके पास में ट्रांसलेशन है तो आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी। Otherwise, I can. Let the Supreme Lord be merciful towards me. He is the one friend and soul of all living entities in the world, and he maintains all for their ultimate happiness by his 6 transcendental opulences. May he be merciful towards me so that I, as before, may be empowered with the introspection to create, for I am also one of the surrendered souls who are dear to the Lord. This is an amazing verse. It teaches a lot. These 4 verses, especially, they are the prime verses because Lord Brahma is concluding his prayers with these the last 4 verses. ये जो 4 श्लोक हैं ये बहुत ही प्रमुख श्लोक हैं। इसमें ब्रह्मा जी जो अपनी प्रार्थनाएं हैं उनको यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। So what he is saying, the Lord is opening his eyes, so he is asking for only one thing. What is that? Please be merciful towards me. तो भगवान यहाँ पर जो अपने नेत्र खोल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बस ये कह रहे हैं कि कृपया आप मेरे प्रति करुणाशील रहिए। And in what way I want you to be merciful towards me by empowering me with the introspection to create. तो किस प्रकार से आप मेरे प्रति करुणाशील रहिए कि जिससे कि मैं जो सृजन की जो शक्ति है वो आप मुझे प्रदान करें। That is introspection. What do you say for introspection, Prabhu, in Hindi? अंतः क्या बोलेंगे उसको, आंतरिक जो मनन है, आंतरिक मनन। Let's see this. There must be some important word. Atmanirikshan. Is that correct? Okay, Prabhuji. Yes. मैंने मनन बोला. Yes. Atmanirikshan, ikshan, seeing internally, no? Introspect. So, in devotional service, introspection is one of the most important quality. भक्तिमय सेवा में जो आत्मनिरीक्षण है वो एक बहुत बड़ा गुण है। Unless we introspect, we cannot advance in devotional service. जब तक हम लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। Many places where we are facing challenges, we are facing setback, we are facing some misunderstandings, miscommunications, some problems, or whatever. In everything, unless and until we do search inside, search in our own hearts, what is this that is there something that I can improve? We cannot go forward in devotional service. तो जहाँ कहीं पे भी हमको अन्य अन्य प्रकार से ये समस्या आती हैं, तो जब तक हम लोग जो भक्ति के भाव से अपने जो प्रयास हैं उनको हम लोग नहीं उसमें युक्त होंगे, तो तब तक हम लोग आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएंगे। See, we are thinking that creation means, okay, creating a temple, creating a community, creating some big, a palace or whatever as the creation. But creation is not that alone. Creation is creating that mood of bhakti in our hearts. तो सृजन का जो सामान्य अर्थ है उसके अनुसार हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ मंदिर का निर्माण करना, किसी भवन का निर्माण करना या कुछ इस प्रकार से, लेकिन सृजन का वास्तविक अर्थ है कि हमारे हृदय में जो भक्ति है उसको जागृत करना। So that is exactly where Krishna resides when we do introspection. तो जब हम लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं तो ये वही स्थान है जहाँ पर कि भगवान आकर निवास करते हैं। But again, this introspection is also a gift of Krishna. लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखें तो ये जो हम लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं तो ये भी भगवान के द्वारा ही दिया गया उपहार है।
So this word introspection is something which is very, very rarely used in throughout Bhagavatam, maybe one or two places only. तो ये जो आत्मनिरीक्षण जो शब्द आया है, तो ये बहुत ही कम प्रयोग में आता है और शायद पूरे भागवतम में ये 2 या 3 जगह पे इसका प्रयोग हुआ है. But it is one of the most important quality that is required for devotional service. That's why it is very rarely used. परंतु ये बहुत ही एक जो कम पाया जाने वाला जो गुण है वो है, और इसीलिए इसको बहुत कम ही देखा गया है. In other words, it is more mulyavan, very, very valuable. Yes. तो दूसरे भाव से यदि हम लोग इसको समझे तो इसका अर्थ है कि ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है. And very rarely found in among people. Though nobody introspects. Every time we say we point the finger like this, and we don't realize that the 3 fingers are pointing at us. So the moment we do this, then we don't. It means we don't do introspection. तो ये लोगों के बीच में बहुत ही कम देखा जाता है, क्योंकि हम लोग जो हमारी उंगली है वो दूसरी तरफ दूसरे की ओर करते हैं, लेकिन उस समय हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो 3 उंगलियां हैं वो हमारी तरफ आ रही हैं. इसका अर्थ है कि हम लोग ये जो आत्मनिरीक्षण हमको करना चाहिए वो हम लोग नहीं करते. इसीलिए ये बहुत यस Mahatapurna. Yes. So, so this is the first step, right? And so he is requesting, he is begging Krishna that you please cast your merciful glance towards me. तो ये पहला स्तर है जहां पर ये प्रार्थना ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि कृपया आप अपना जो दृष्टिपात है वो मेरी तरफ करें. Frankly speaking, it is the Lord's glance that actually creates this entire material world, isn't it? तो ये यदि हम लोग इसको बहुत ऐसे सही दृष्टिकोण से देखें तो ये भगवान की इच्छा है कि वो सृजन करना चाहते हैं. Sa ikshate, it is said in Vedas, means he saw and then the whole world is created. यस, तो उपनिषद में ये शब्द आता है, सही इच्छते, कि भगवान अपनी इच्छा से इस संसार की सृष्टि करते हैं. ईक्षते, यस, ईक्षते, it is in the Upanishad. So sa ikshate, so when he saw, he created this entire material world. So when he sees me also, then he will empower me with the power to create. तो क्योंकि भगवान ही इस सृष्टि का सृजन करते हैं, तो यदि भगवान की दृष्टिपात मेरे ऊपर में होगी तो जो भक्ति का भाव है उसको भी भगवान ही वो हमारे हृदय में प्रकट करें. In the 10th canto, where Brahma does the other prayer, the repentance for the Brahma Vimohan Lila, there one specific word is used which is very interesting. It is called Swaka Arthanam. ब्रह्मा जी की जो अन्य प्रार्थना है 10वें स्कंद में जो ब्रह्म विमोहन लीला, तो वहां पर वो स्वका अर्थम, प्रभु जी, Arthanam, Swakarthanam. स्वका अर्थानाम, वहां पर ये शब्द का प्रयोग हुआ है. And the explanation for that is really beautiful. I think it is और 10, उसका 13, जो विवरण है 15 वो verse बहुत number. सुंदर है. So what it is said there is, it is said there is, the Lord gives us the inspiration for creation, or the desire, inspires us the desire to serve by his glance. तो वहां पर ये बताया गया कि भगवान प्रेरणा देते हैं इस सृजन के लिए, उनकी सेवा करने के लिए. Even if you have to cook something, you want to offer something, that desire to do that service comes from the glance of the Lord. यदि आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, तो उसके लिए भी जो प्रेरणा आती है वो भी भगवान हमको प्रदान करते हैं by his glance. उनकी दृष्टिपात से. And the next thing that is said is that the next thing that the Lord does is he smiles at us. जो दूसरा जो उसमें बताया, तो वो भगवान फिर वो अपनी मुस्कान देते हैं. And what is the importance, significance of that smile? Through the smile, he removes all the negativities, distress, and all the challenges that come in the way of our service, and gives us the courage and this
and the utsaha, the enthusiasm to do the service more joyfully. तो वो जो मुस्कान भगवान देते हैं, उसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, जो हमारे अंदर में जो नकारात्मक जो ऐसा अवगुण है, उसको भगवान दूर करते हैं, हमको साहस और उत्साह देते हैं, जिससे कि हम लोग उनकी सेवा में प्रगति कर सकें। So both these are very important, the Lord's glance and the Lord's smile. तो दोनों महत्वपूर्ण है, भगवान का दृष्टिपात और भगवान का मुस्कुराना, उनकी मुस्कान। And both of them are covered in these 4 shlokas. एवं ये जो दोनों हैं, इनको ये जो 4 श्लोक हैं, इसमें इनको बताया गया है। And even if you see in a practical world, when we glance at somebody with a nice loving glance and then nice smile we give, how nice, how happy they feel. यदि हम लोग व्यावहारिक जगत में भी ऐसे देखें, तो यदि कोई किसी के समक्ष इस प्रकार से अपना भाव व्यक्त करता है, वो मुस्कुराता है, तो वो देखा जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, वो किस प्रकार से उसको उसका जो एक अनुभूति है वो प्राप्त होती है। And it's the best way to establish relationship. Have a nice glance, loving glance, and smile very lovingly. तो ये बहुत सही जो एक प्रक्रिया है, जिससे कि हम लोग किसी के साथ में अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं, कि किसी को बहुत मतलब अच्छे ढंग से उनको उनकी तरफ देखना और मुस्कुराना। The loving glance and the loving smile, that प्रेम पूर्वक उनकी तरफ दृष्टि देखना और प्रेम पूर्वक ही मुस्कुरान करना। that establishes such a strong loving relationship with any living entity. तो इसी से हमारा जो प्रेम का संबंध है, जो बहुत प्रगाढ़ होता है, वो स्थापित होता है। So this is the first thing that is praying to the Lord, that please cast your loving glance, merciful glance towards me, so that I may be empowered with the introspection to do the creation seva. तो ये ब्रह्मा जी की पहली प्रार्थना है कि आप कृपया मेरे ऊपर में अपना जो दृष्टिपात है वो करिए, जिससे कि मैं जो उनका आत्मनिरीक्षण है उसको मैं अच्छे से कर पाऊं। Now he goes to the next important shloka, in which he is asking for something more. And it's very important for us to remember this, because in our day-to-day work also, we have to pray to Krishna for these benedictions, अगला जो श्लोक है, इसमें अभी ब्रह्मा जी अन्य प्रार्थना कर रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए भी व्यावहारिक है, जो हम लोगों की दिनचर्या होती है, उसमें हम लोग भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं। So let's read this slok. Esha prapanna varadora mayatma shaktya yadyat karishyati gruhita gunavatarah tasmin svavikramamidam srijatopi cheto yunjita karma shamalam chayatha vijahya. Can somebody read the translation? Translation: The Supreme Lord, the personality of Godhead, is always the benefactor of the surrendered souls. His activities are always enacted through his internal potency, Rama, or the goddess of fortune. I pray only to engage in his service in the creation of the material world, and I pray that I not be materially affected by my works, for thus I may be able to give up the false prestige of being the creator. So in this, the last line is the most important thing. तो इसमें जो अंतिम जो पंक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। He's saying that I pray that I not be materially affected by my works. In other words, I don't start thinking that I am the doer. तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वो कह रहे हैं कि मैं जो भी भौतिक सृजन कर रहा हूँ, तो इसके द्वारा मैं प्रभावित नहीं हूँ,
या मेरा अंदर में ये भाव नहीं आए कि मैं करता हूँ. The moment we start having this mentality that I am the doer, we destroy everything. तो जैसे ही हमारे अंदर में ये कर्ता का भाव आता है तो जो कुछ भी प्रयास होता है वो विनष्ट हो जाता है. Whatever endeavors that we do in our bhakti, it becomes stale and worthless. तो जो भी प्रयास हम लोग भक्ति में करते हैं वो बिल्कुल वो निरर्थक हो जाता है और वो रुक जाता है. हम लोग वो निरर्थक हो जाता है. So this is why Krishna also advises Arjuna in the 11th chapter, 33rd verse, Nimitta matram bhavasabhya sachin, means just be my instrument. I am doing everything, just become my instrument. Through you I am doing everything. So you just be my instrument and do whatever I say. तो इसी प्रकार से भगवान भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन से कह रहे हैं कि आप खाली निमित्त बन जाओ जो मेरी सेवा है उसमें. So this false prestige of being the creator, that he wants to give up, and so for that he is begging for the Lord's mercy. जो हमारा मिथ्या जो एक भाव है कर्ता का, तो उसको निरस्त करने के लिए, उसको हृदय से उस अनर्थ को हटाने के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. So this we have to is a very, very important thing. That is why these prayers are very much relevant for us, because we are continuously engaged in creation work in our own limited ways in this material world. And second, first is we are always engaged in creation, doing something or other, some creationary work. Second thing is that we are always in touch with the material energy, and that is also a risk. So for both these things, we have to pray to the Lord that let me not be materially affected by my work. First point. Second point is let me not get this false prestige that I am the doer. यहाँ पर प्रार्थनाएं सब महत्वपूर्ण हैं. ब्रह्मा जी ये हमको बता रहे हैं क्योंकि हम भी कुछ हद तक ये देखते हैं कि हम लोग भी इस संसार में कुछ न कुछ जो कार्य हैं उसमें युक्त हैं. तो यहाँ पर जो दो चीजें हैं, दूसरा इस स्थान पे रहते हुए जो भौतिक शक्ति है उसका प्रभाव भी है, और जो मिथ्या कर्ता का जो भाव है उसका भी जो अनर्थ है वो भी है. तो दोनों के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे लिए भी ये इतना ही महत्वपूर्ण है. So always we should chant these 4 prayers minimum, if not the entire set of prayers, at least these 4 to the Lord, begging for His mercy. तो यदि हम लोग पूरी जो ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना है जिसको हमने 3 दिन से श्रवण कर रहे हैं, यदि उसको हम लोग पूरा नहीं भी गा पाए तो कम से कम ये जो अंत के ये 4 श्लोकों पे अभी बताया जा रहा है, 22 से आगे के ये 4 श्लोक, तो ये प्रार्थनाएं हमको अवश्य करनी चाहिए. So moving on to the next sloka, that is verse number 24. Nabhi pradadiha satombhasi yasya punso vijnana shakti rahamasa mananta shakte rupam vichitram idamasya vivrinvato me mari rishishta nigamasya giram visargaha. Can somebody read the translation? Translation: The Lord's potencies are innumerable. As he lies down in the water of devastation, I am born as the total universal energy from the navel lake in which the lotus sprouts. I am now engaged in manifesting his diverse energies in the form of the cosmic manifestation. I therefore pray that in the course of my material activities, I may not be deviated from the very vibration of the Vedic hymns. See, this is the next prayer that he is asking. What is the third prayer? First, he said, please cast your merciful glance and the power to create introspection. In this next verse number 23, he was asking that please ensure that I don't get deviated
I don't get affected by the material work and don't get this false prestige that I am the doer. And in the next, this verse, what he is saying, I am going to be engaged in material activity. I am always going to be engaged with the materialistic people all the time, creating them, dealing with their karmas and all kinds of things I have to do. But in that process, let me not be deviated from the vibrations of the Vedic hymns. This is very, very, very important. Mari Rishishta Nigamasya Giram Visargaha. In other words, please never take me away from the taste for relishing Bhagavad Gita, Bhagavatam, and the holy names while I am engaged in my day-to-day responsibilities and the duties. This is the prayer that Brahma is praying, and it is very much relevant for us. Because the moment we are away from Bhagavad Gita, Bhagavatam and chanting, whatever activities we do will be only on the material platform. It can be elevated to the spiritual platform only when it is substantiated or balanced with the vibrations of the Vedic sound, which is Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो प्रार्थना बढ़ रही है, तो 22वें श्लोक में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप अपना दृष्टिपात है उसको मेरे ऊपर में आप करिए। उसके बाद में 23वें श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जो मेरी जो सेवा है उससे मैं विचलित न हूं और मेरे अंदर में मिथ्या जो कर्ता का भाव है वो उत्पन्न हो। और इस 24वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं मेरा जो भौतिक जो भी कर्तव्य है उसको पूरा करते हुए कभी भी मैं जो वैदिक मंत्र हैं उनके उच्चारण से या उनके श्रवण पठन से मैं कभी भी विलग न हो पाऊं, दूर न हो पाऊं। और ये जो प्रार्थनाएं हैं यही प्रार्थनाएं भगवत गीता, भागवतम, उनकी यही प्रार्थना है। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना कि वो पठन और श्रवण जो है उससे वो हमेशा भगवान से ये कह रहे हैं। तो प्रभु जी ने बताया कि यदि ये नहीं हो पा रहा है तो जो भी क्रिया हम लोग करेंगे, जो भी हमारा प्रयास रहेगा, तो वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा, वो भौतिक ही रहेगा। Thank you, bro. Why it is very importantly he is focusing on this? Because Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and the holy names is what is give us the introspection. It is all will give through that only Krishna will give us an introspection. Because when we study Bhagavatam, we are able to introspect, isn't it? Through the translation purport, by meditating on this entire prayer, we can research ourselves. What is the fault in me? How can I correct it? Right? This is where he is asking for Krishna to be always present in the form of these, very sound vibrations. तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर ब्रह्मा जी हमको बता रहे हैं, तो वो आत्मनिरीक्षण यदि हमको करना है तो वो सब ये जो प्रक्रियाएं ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं अलग अलग, तो इसी के माध्यम से ये आत्मनिरीक्षण हमारा हो पाएगा। तो ये जो प्रार्थनाएं अभी ब्रह्मा जी कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से हमारा आत्मनिरीक्षण हो पाए। Now coming to the last verse of Brahma ji, these are verses which can be studied for months together, but this is at least a starter. We can at least start off with this session. So nicely you have organized the last 3 days. So sa vadabra karuno bhagavan vivruddha prema smitena nayanam puruham vijrumbhan utthaya vishwa vijayaya chano vishadam madhya gira panayata purusha puranaha. Translation: The Lord, who is supreme and is the oldest of all, is ultimately merciful. I wish that he may smilingly bestow his benediction upon me by opening his lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and remove our dejection by kindly speaking his directions. See, one thing we have to understand here is that Lord Brahma was very much dejected because the waters, you're sitting in the lotus and the water of devastation was rising above, and he has to do his duty of creation.
he does not know how to do. So he is very much dejected. Many times we also face such challenges that we want to do some service, we cannot do it. We don't. The situation is not favorable. Or people are not cooperating, or some other challenges are coming on the way, which stops us from doing. Our own enthusiasm is not there. So all these things are adding together and making us feel dejected, isn't it? So many times as devotees, whenever we are engaged, we are dejected. So the only way we can remove this dejection is when Krishna smiles at us, bestows his benediction. But see, this is the last and final thing that Brahma is waiting to ask for. In the last 4 verses, the benedictions that he is asking for, the last is the most important. Sprema smitena, loving glance. Let him cast his loving glance. Nayana Ampuragam, by opening his loving glance, loving smile, by casting his loving smile, and with the loving glance, let him, remove my dejection. And then he kindly speak what I should speak and instruct us what we should do. This is the most powerful verse, because Krishna is Adabra Karuna, unlimitedly merciful. He can do whatever he wants. तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी उनकी जो स्थिति है, तो प्रतिकूल जो परिस्थिति है उसमें जैसे जब ब्रह्मा जी वो सृजन करना चाहते हैं, तो उस समय जो विनाश का जो जल है, जब उसका स्तर जब बढ़ता रहता है, और ब्रह्मा जी को उनका जो सृजन है उसकी जो क्रिया है उसको भी उन्होंने करना है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी जीवन में यदि अलग अलग जो क्रियाएं हैं उसको हमको संपन्न करना है, लेकिन परिस्थिति यदि विपरीत होती है, कभी कभी हमारी अपनी स्वयं की उतनी शक्ति नहीं होती है, हमारे अंदर में उतना जो उत्साह है वो नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में हमको क्या सहायता करने वाला है, जिससे कि हम लोग जो हमारी सेवाएं हैं उसको करते हुए और हम लोगों का भक्ति का भाव भी बना रहे, तो वो भगवान से जो प्रार्थना यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं, यही हमको सहायता करने वाला है, ये हमारा बस आश्रय है कि भगवान वो उनका जो प्रेममयी जो दृष्टिपात है, उनका जो प्रेममयी जो उनकी मुस्कान है, ये सब भगवान से हमको प्राप्त हो, तो तभी जाके हम लोग ये सब जो हमारे कर्तव्य हैं उनमें हम लोग अपना प्रयास जारी रख सकते हैं. So, before we go to a couple of important verses, now the prayers are over. The Lord is going to speak now, few verses that he's going to speak. As I told you, there are 3 sections. The section before the prayers, which identifies the mood of the bhava of the devotee, the actual prayers themselves, the instructions, all philosophical conclusions, everything in it, and then what the response from the Lord post the prayers, right? So this is always the things that we need to focus on. Now, before we go into the third part, the smile is very, very important to note, because it's one thing that is missing in our life. यहाँ पर हम लोग देखें, अभी तो प्रार्थनाएं तो समाप्त हो गई, तो पहले जो इसके 3 खंड थे, उसमें पहला था कि हमारा भाव क्या होना चाहिए, उसके बाद में बीच में प्रार्थनाएं थी, और अभी भगवान वो किस प्रकार से भगवान ये हमको सहायता करते हैं, ये 3 चीजें हैं, लेकिन इन तीनों में महत्वपूर्ण है कि जो भगवान की जो मुस्कान है, तो उसके द्वारा कैसे भगवान वो कृपा प्रदान करते हैं. And there is one of the most beautiful purports which we should read. Without reading that, we cannot understand the importance, the significance of the Lord's smile. तो इसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, बिना उसके हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान की जो मुस्कान है उसका महत्व क्या है. So let's go to 3:8:27. 3:8:27. तो ये जो तात्पर्य है, ये 3रे स्कंद के 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है.
I will first sing this one and then you can read the translation. Someone who is interested to read the purport, they can read too. Mukhe lokatihara smitena parispurat kundalamanditina shonayitena dharabimba bhasa pratyarhayantam sunasena subhva. Who would want to read the translation and the purport? One each also can do. Translation: He also acknowledged the service of the devotees and vanquished their distress by his beautiful smile. The reflection of his face, decorated with earrings, was so pleasing because it dazzled with the rays from his lips and the beauty of his nose and eyebrows. This is such a beautiful verse, you know. Whenever we do the service, the Lord acknowledges and vanquishes our distress by his beautiful smile. Our Brahma was also dejected. So he's praying to Krishna to cast his beautiful glance and beautiful smile, loving glance, loving smile upon him. Right? And all these descriptions are mentioned here. But then the purport is something really too good. Who would want to read this purport? Who would want to read? रणछोड़ कृष्ण प्रभु जी, आप तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं यदि आपके पास में है. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So the purport for 3827: devotional service to the Lord is very much obliging to him. There are many transcendentalists in different fields of spiritual activities, but devotional service to the Lord is unique. Devotees do not ask anything from the Lord in exchange for their service. Even the most desirable liberation is refused by devotees, although offered by the Lord. Thus, the Lord becomes a kind of debtor to the devotees, and he can only try to repay the devotees' service with his ever-enchanting smile. The devotees are ever satisfied by the smiling face of the Lord, and they become enlivened. And by seeing the devotees so enlivened, the Lord himself is further satisfied. So there is continuous transcendental competition between the Lord and his devotees by such reciprocation of service and acknowledgement. What an Hare amazing purport, isn't it, Prabhu? Well, While reading only, can I read yes, this in Hindi, Prabhu? Can I please, read in please, Hindi? please. I was going to ask you to do that. Yeah. Such an amazing. So अभी प्रभु जी ने जो बताया कि भगवान की जो मुस्कान है उसका जो पूरा विवरण है ये बहुत ही दिव्य श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है. तीसरे स्कंद का अध्याय 8 उसका श्लोक संख्या 27 ये उसका तात्पर्य है. भगवान अपनी भक्ति से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं. आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्यात्मवादी हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा अद्वितीय होती है. भक्तजन अपनी सेवा के बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इनकार कर देते हैं. इस तरह भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा से ऋण होने का प्रयास कर सकते हैं. भक्तजन भगवान के हंसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं. भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं. इस तरह सेवा तथा स्वीकृति ऐसे आदान प्रदान से भगवान तथा भक्तों के बीच सतत एक दिव्य स्पर्धा चलती जाती है. What an amazing purport, right, Prabhu? Yes, Prabhuji. This is something Srila Prabhupada he took in a just other way around. Which one? The Srila Prabhupada purport, Prabhuji, means like how the Lord thinks what we have to do, but what the Lord is thinking is totally Thinking, yeah, he goes amazing. into the mind. He goes inside the mind of the Lord, isn't it? Yeah. Only pure Yes. devotees can do that, you know, like Prabhupada. Yes. So the important point here is that the devotees don't ask for anything from the Lord except for a smile. तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि भगवान से भक्त कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस भगवान की मुस्कान के अलावा.
And have you ever seen the Lord Krishna, Lord Ram, in the Murti form? Have you ever seen a form without a smile? तो क्या कभी किसी ने भगवान कृष्ण या बलराम जी उनका ऐसा कोई रूप देखा है जिसमें भगवान मुस्कुरा नहीं रहे हैं? So he is always smiling. We just have to absorb that in our hearts and be satisfied with it. तो भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो हमको क्या करना है? हमको उस मुस्कान का दर्शन करते हुए उसको अपने हृदय में स्वीकार करना है। And that is what is the indication here. The devotees are ever satisfied by the smiling face of the Lord. और यही यहाँ पर इंगित किया जा रहा है कि भक्त लोग वो भगवान की जो मुस्कुरान को जब देखते हैं तो उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। And because the devotees are not asking for anything, the Lord becomes a debtor. He becomes he becomes a debtor. तो यहाँ पर क्योंकि भक्त भगवान से जब कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान ये सोचते हैं कि वो भक्तों के ऋणी होके, क्योंकि भक्त वो बदले में कुछ नहीं मांग रहे हैं भगवान से। And he has to give something most valuable that is not available through any other material objects in this world. तो इसके लिए भगवान उनको वो वस्तु देना चाहते हैं जो इस भौतिक जगत में अन्य किसी भी प्रक्रिया में या अन्य कुछ भी कहीं किसी भी प्रयास से वो जो उपलब्ध नहीं है। So this is the best of the purpose to understand what Krishna is actually wanting from us and what devotees are actually wanting from Krishna, the real devotees. So we can follow in their footsteps and be satisfied in our devotional life. तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये समझना कि भगवान भक्तों से क्या चाहते हैं और भक्त भगवान से क्या चाहते हैं। भक्त वो भगवान की मुस्कान चाहते हैं और भगवान जब भक्त वो भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं तो भगवान अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं। तो इसी भाव को यदि हम लोग समझ के हम भी अपना प्रयास करेंगे तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर संदेश है वो हम सबके लिए नहीं, ये आध्यात्मिक जीवन है उसमें हमारे लिए लाभकारी है। Now coming back to, I'm rushing this verse. I don't feel like taking my mind out of this verse, but then we tried by the time. Let's go quickly to what Krishna says. Krishna starts speaking from 3:9:29. Let's get back to our Brahma's prayers, because it is very important to understand what Krishna is speaking, whatever prayers that Brahma has spoken, what is Krishna's take on it? How does he feel about it? यहाँ पर महत्वपूर्ण है अभी भगवान वो क्या सोचते हैं जो अभी तक ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की हैं, तो भगवान उसके प्रति कैसा सोच रहे हैं, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये अभी ये जो आगे का तीसरा खंड है उसमें ये दर्शाया जा रहा है। So this is 3:9:29. Let's read. Shri Bhagavan Vacha Ma Veda Garbhagas Tandrihim Sarga Udyamamavaha Tanmaya Paditam Hyagre Yanmam Prarthayate Bhavan. Prabhu, in the interest of time, let's read it in Hindi only, because in the screen anyway it's there in English, so someone can read the Hindi the translation. Prabhuji, just one minute. I was just reading from the mobile, so I came out of that. Again, I have to go there. So Okay. Then no worries. I need little time only, Prabhuji. I can read, Prabhuji, Hindi. Yes, saying they can read. हिंदी में प्रभुजी, हिंदी में। Yes. हाँ जी, हाँ जी प्रभु। ये संख्या 29 श्लोक है। 29 इसका तीसरा अध्याय नो। यस यहाँ ओपनिंग तात्पर्य। यस 29 तात्पर्य भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष। Prabhu, you are reading from some other chapter. 3:9:29, Prabhu. Yes, Prabhuji, is the same. Is it? भगवान या उनके प्रामाणिक
The Supreme Lord says, Bhagavan Vacha. So Prabhuji, I just started with the purports. I'll read first the translation. No, translation. Yes, translation. Sorry. Okay, translation. Same Prabhuji is the same which I read. Tatparya. No, not Tatparya. नहीं प्रभु पहले अनुवाद पढ़िए, अनुवाद पहले. अनुवाद. तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित. तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है. This is the beautiful point here. First and foremost is Ma Gasa Tandrin. Do not be depressed. Krishna is giving this first instruction. Don't be depressed. Whatever you want, I have already granted to you. You don't have to beg for it from me. It's already there in me. यहाँ पर भगवान जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें वो कह रहे हैं कि आप चिंतित मत हो, जो भी तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे सृजन के लिए वो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ. This is the first and foremost thing that we need to understand. One side we talked about the introspection part. The other thing that we should understand from Brahma ji in his prayers and especially in our devotional service is that never ever be dejected, depressed or anxious about the seva. यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं उनकी प्रार्थना थी आत्मनिरीक्षण के लिए, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उसमें हमको ये समझना है कि जब कभी भी हमको सेवा का अवसर होता है तो उसमें कभी भी हमको चिंतित नहीं होना है, या हमको इस प्रकार से जो भी नकारात्मक जो भाव है उसमें नहीं रहते हुए उत्साह पूर्वक हमको सेवा करने का प्रयास करते रहना है. That is the most important thing. The moment we are dejected, our service get disturbed and it loses its focus. We lose our focus. तो जैसे ही हम लोग उसके प्रति ऐसे हमारा जो भाव है वो विपरीत होता है, तो जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग फिर उसके उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर में वो उत्साह समाप्त हो जाता है. So Prabhu, Ranchor Prabhu, do you want to read the Tatparya? This is another gem of a purport which I really fell in love with. You can read this in Hindi directly, Prabhu. Yes, Prabhuji, yes. In this particular thing, Prabhupada gives such an important instruction. Especially we talked about being relieved of the doer mentality, that I am doing mentality. So that Prabhupada is fully focusing on that part in this particular purport. Yes, Prabhu. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी निसंदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी असक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए. उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है. वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूं, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है. अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और उसे उस कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे, किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया. जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता. ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों के अनुसार करने वाली शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं. हरे कृष्णा. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. That is a beautiful purport. This is how practically Prabhupada has derived the essence in this purport. You please, Prabhu's Mataji's, my humble request to you is just absorb yourself in these purports. These purports are so sweet. In all the three worlds, you will not get it. Even the spiritual world, you will not get this of purports, I tell you.
So please focus on these in your free time. And this is the first point that Lord says, that don't be dejected. Whatever you are depressed, whatever you ask for has already been granted to you. The next important verse, there are many other verses also. In the interest of time, I'm only telling only 2 of these verses. Next is 3:9:38. While I am reciting, please take it, Prabhu. Yaccha karthanga mat stotram mat kathabhyudayankitam yadva tapasite nishta sa yesha mad anugraha. You can read it in Hindi directly, Prabhu, that anuvad. यस प्रभु जी। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की है, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। This is one of the most important final message, because many times we may do service we give some Bhagavatam class, we may preach to somebody, we may do some book distributions and other things, or we may do so many things, or some nice ideas and realizations might come about Krishna and his activities. So many things will be there. Some devotees may write books, some devotees may do some executive project and all that thing in Krishna service. But never ever be puffed up that you are the one doing it. All these also, whatever. See, no one can do as much service as Brahma, right? Brahma did it for the age of 100 years. We are not even doing for a few hours or a few minutes. So, what is the point in becoming puffed up in that thing, right? So, he's guarding, he's warning Brahma that whatever tapasya you have done, whatever nishta with which you have done, whatever faith you have, whatever prayers you have chanted, it's not all by your hard work. It is because of my anugraha, my causeless mercy. Always remember this in your mind. That way you will not become proud at any time. You will not be caught up by pride at any time, which Brahma was asking for in his prayer, right? So that is the very, very important message in these 2 shlokas. यहाँ पर प्रभु जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के द्वारा जितनी जो सेवाएं की हैं, तो ये किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी संभव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी भगवान जो महत्वपूर्ण जो संदेश है वो ये देना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के माध्यम से कि ये सब वो भगवान की ही अहेतुकी कृपा से संभव है। और यदि ये हमने समझ लिया तो फिर जो भी कार्य यदि कोई वो कर पा रहा है भगवान की अहेतुकी कृपा से, तो वो उसके प्रति फिर गर्वित नहीं होगा। तो ये यदि किसी ने समझ लिया और इसको अपने जीवन में पालन किया, तो फिर किसी भी सेवा में किसी को कोई समस्या कभी नहीं आएगी। So, other 3 verses are also very important, but time is also of the essence. So, I will stop here. Any questions, any reflections that devotees would like to share? Maybe a few minutes. If time is there, Prabhu. If not, we can close. Thank you so much, Prabhuji. So